Welcome back to Droanacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 4th June 2022. Well, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे, एडिटोरियल्स कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. इस वीडियो में आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे. Our first topic is important from GS paper 1 point of view. The title of this topic is The Dark Side to Modern Domesticity in Tamil Nadu. ये टॉपिक GS पेपर 1 सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. विल डिस्कस कि इस आर्टिकल में किस चीज़ की बात की गई है. नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट गवर्नमेंट्स appellate पैनल फॉर सोशल मीडिया. सो लेट्स बिगिन विद इट. सो हमारा आज का पहला आर्टिकल GS पेपर 1 सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. द टाइटल ऑफ दिस आर्टिकल इज़ द डार्क साइड टू मॉडर्न डोमेस्टिसिटी इन तमिलनाडु. इस आर्टिकल में विमेन की पिक्चर यहाँ पे शो की गई है. डिस्पाइट कि तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का जो प्राइमरी फोकस है दैट इज़ ऑन द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ विमेन, still women in Tamil Nadu they face misogyny and violence. इस आर्टिकल में जो लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा आया है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस जो तमिलनाडु में जो सिनेरियो है, जो स्टेटस है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. एंड विल सी दैट द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट्स वेलफेयर मेजर्स फॉर women, have they reaped any benefits or not? We'll see that also. And what makes the modern domesticity in Tamil Nadu increasingly violent despite of government's focus on this particular issue? And there's another case of non-criminalization of marital rape जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है. उसका impact उसको हम समझेंगे in the light of Tamil Nadu. So let's begin with it. Now the basis of this article is the data from National Family Health Survey 2019 to 2020. NFHS की जो रिपोर्ट थी उसमें रिवील किया गया that in Tamil Nadu 44.7% of the married women they have experienced physical or sexual violence in their homes. And जिसकी वजह से according to the National Family Health Survey, Tamil Nadu now ranks second in India when it comes to domestic violence against women. So NFHS की जो रिपोर्ट है, it says that more than 2/3 of the married women in Tamil Nadu are said to be afraid of their husband due to the spousal violence. Further, 79.8% women in Tamil Nadu they felt that it is acceptable for husbands to beat their wives, and 81.1% of the married women victims in Tamil Nadu neither informed nor sought for any help from any person. This is the scenario of domestic violence in Tamil Nadu. You can look at the data. किस तरह यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि तमिलनाडु स्टेट में डोमेस्टिक वायलेंस का रेट कितना ज़्यादा हाई है, एंड हाउ 79.8% women in Tamil Nadu they feel that it is acceptable for their husband to beat them. 81.1% of the married women they never informed anyone or never they thought to ask for help from anybody. Now यहाँ पे एक और चीज़ समझनी ज़रूरी है बिकॉज तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो द स्टेट गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग on the welfare of the women. They have their focus on this particular aspect of domestic violence in Tamil Nadu. So now we need to know that the welfare schemes that are run by the state government, have they reaped any benefit with respect to this? So according to the National Family Health Survey 2019 and 2020's data for Tamil Nadu, it shows that over the year the state has achieved remarkable gender parity in terms of higher education. Higher education के perspective में gender parity में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है. Especially here if we talk about the Dalit female enrollment in higher education
it has seen the highest gender parity index in the country. जब हायर एजुकेशन के अंदर दलित फीमेल एनरोलमेंट की बात करते हैं तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जेंडर पैरिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट में देखने के लिए मिला है. विद परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट women's enrollment in higher education that is higher than scheduled caste men. In Tamil Nadu, the female labor participation is again much higher than the national average. जितना नेशनल एवरेज है उससे कई ज़्यादा हायर आपको फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन तमिलनाडु में मिलेगा. Though the labor force participation in Tamil Nadu does not pair well with women's education. So now comes another question, that what makes the modern domesticity in Tamil Nadu increasingly violent despite of government's focus. ऐसा क्यों है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो मॉडर्न डोमेस्टिसिटी है उसमें वायलेंस के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर यहाँ पे आता है कंपल्सरी मैरिज. नाउ सी, डिस्पाइट ऑफ हायर एजुकेशन, डिस्पाइट ऑफ हैविंग एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, द चॉइस marriages by young women, they are not still acceptable in several caste groups in Tamil Nadu, जिसकी वजह से कंपल्सरी मैरिज होती है एंड चॉइस मैरिजेस उतना इजीली तमिलनाडु में सेवरल कास्ट ग्रुप में हो ही नहीं पाती, जिसके चलते डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ जाते हैं. यहाँ पे एक और बड़ा फैक्टर आता है कास्ट पेट्रियार्की. Domesticity steeped in caste patriarchy of masculine control over production and protection. This is viewed as essential for shaping women's subjecthood as dependent and subordinate and responsible for family and caste mobility. एक तरीके से पेट्रियार्की कास्ट की जाती है डोमेस्टिसिटी में, so that you can show that there is a masculine control over production and protection. And this basically shapes women कि they are dependent, वो subordinate हैं, and their main responsibility is towards their family. This is also one important factor. The choice of hypergamous intercaste marriage by young women, this often results in violence. एंड जिस कास्ट ग्रुप को अगर जो विमेन बिलोंग करती है उसी कास्ट ग्रुप के जो मेन हैं वो इस वायलेंस को क्रिएट करते हैं. एंड दे आर इंक्रीजिंगली गेटिंग ट्रेन्ड इन न्यू मैस्कुलिनिटी एंड कास्ट पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंटिंग द इंटरकास्ट मैरिजेस. देन देयर इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ अनपेड फीमेल लेबर. सी, only 20 to 22% young urban women, they are paid in work, while 60% of the educated young women, they stay at home to take care of household or await marriage. तो जो young urban women हैं उनमें से भी सिर्फ 20 to 22% ही ऐसी हैं those who are working and those who are getting paid, rest they are staying at home. Then there are also strings to higher education. Higher education for young women, it is thought of being instrumental in enhancing the family respectability, prestige and marriage prospects. सिर्फ इसे लेकर जो हायर एजुकेशन है वो यंगर women को दी जा रही है. Women access to technology and labor market, this cannot be achieved the desired freedom and autonomy for women in domestic sphere. And this is the reason for the exclusion of women in this particular space. Now यहाँ पर ही एक और important case important हो जाता है, the case of non-criminalization of marital rape. Now Justice Verma committee ने suggest किया कि marriage should not be considered as an automatic and irrevocable consent for sexual act, and that now marital rape should be considered as a criminal offence. But union government is unwilling to criminalize the marital rape,
and they have strongly argued that this involved societal consensus and not state intervention. अब इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स जो स्टेट्स ले रही है, it basically takes domesticity back to the zone of discursive privacy, जिसमें women's identity or labor, they are depoliticized. So what lies ahead in this picture? So one find that misogyny everywhere being normalized, and it is practiced by men to detriment the women's emancipation. But there is Tamil Nadu. If we talk about Tamil Nadu, it has urgent need to radical reform of marriage, familiarism and domesticity along the lines of Periyar's advocacy of self-respect and women's freedom. We are in that region, part of India, where we have the Periyar's advocacy, the self-respect and women's freedom. We need to, revive those lines here. आगे बढ़ते हैं. हमारा अगला आर्टिकल गवर्नमेंट एपेलेट पैनल फॉर सोशल मीडिया इससे रिलेटेड है. वेल अगेन दिस आर्टिकल इज़ टेकन बाय द हिंदू न्यूज़पेपर. इस आर्टिकल में हमारा जो रिसेंट इशू है, जहाँ पे गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू सेट अप अ पैनल दैट कैन ओवरटर्न द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन मेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ प्रॉब्लमेटिक. सो गवर्नमेंट हैज़ मेड दिस प्लान कि वो एक तरह का गवर्नमेंट एपेलेट पैनल सेटअप करेंगे, जिससे कि ऐसे कंटेंट मॉडरेशन डिसीजंस जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो प्रॉब्लमेटिक हैं, उसे वो वहाँ पे ओवरटर्न कर सकते हैं. तो इस पूरे आर्टिकल में गवर्नमेंट एपेलेट पैनल बिकम्स इम्पॉर्टेंट. So we talk about government appellate panel. So the idea to constitute an appellate committee, this was proposed as an amendment to the controversial IT rules 2021. IT rules 2021 के दौरान इस तरह की appellate committee की constitution की जाए, ये आइडिया तब वहाँ से निकल के आया था. That central government shall constitute one or more grievance appellate committees, which shall consist of a chairperson and other members. These committees will have the final word on any content moderation issue facing a social media platform when appealed by a social media user aggrieved by an order of the platform's grievance officer. तो जो कमिटी है, अगर किसी भी तरह की कंटेंट मॉडरेशन का इशू आता है, उसे लेकर इस कमिटी का फाइनल वर्ड होगा. Any content moderation issue which basically is facing on any social media platform, जब किसी सोशल मीडिया यूज़र ने इसे अपील किया जो कि इससे एग्रीव्ड थे, एंड देन इसे लेकर इस कमिटी में एक फाइनल वर्ड देखने के लिए मिलेगा एज एन ऑर्डर ऑफ द प्लेटफॉर्म्स ग्रीवियंस ऑफिसर. However, user has the right to seek judicial remedy at any time. Now after this, let's discuss the process that has to be followed in case of such grievances. So according to the IT rule, under these IT rules, the social media companies, they are mandated to appoint India-based resident grievance officer. जो ये India-based resident grievance officers होंगे, they will act as an intermediaries, and they will enjoy legal immunity from third-party content on their platform. These officers are responsible for overseeing the grievance redressal mechanism of the complaints from the people who use their services. The company's grievance officer will have to act and dispose of that complaint within 15 days. Currently, the only remedial measure a user has if they feel that a content decision by a company is unfair, that is to approach the courts. तो करंट मेजर तो यही है कि इफ़ एनी यूज़र जिनको लगता है कि जो कंटेंट को लेकर डिसीजन लिया गया है बाय दैट कंपनी के जो ग्रीवियंस ऑफिसर ने जो डिसीजन लिया है, अगर वो अनफेयर है, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट. नाउ जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस, इन केस अ यूज़र इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन जो कि कंपनी के ग्रीवियंस ऑफिसर ने लिया है,
So then they can appeal that decision before government's appellate committee. And now the committee will have 30 days to act on the user's appeal. But then there are some criticism against this particular move. जैसे कि ये जो proposal है, कहा जा रहा है कि इससे this entire thing will come under the direct scrutiny of government. तो जो कंटेंट है जो सोशल मीडिया के ऊपर उसका जो पूरा का पूरा स्क्रूटनी है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगा. सो बाय परमिटिंग द यूजर्स टू अपील डिसीजन ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू अ कमिटी विच इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT. So this is one of the criticism against this move. It says that it curbs dissent also. This mechanism will help to tighten the government's grip on the messaging on social media intermediaries, जिसके through they can curb their dissent as well. And it also suggests that कि जो कंपनी का जो ग्रीवेंस ऑफिसर्स हैं, जो यूज़र जो कंप्लेन है अगर किसी भी कंटेंट को लेकर वो कंप्लेन कर रहे हैं दैट इट इज़ पेटेंटली फॉल्स या फिर ये कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहा है और इट थ्रेटन्स द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, then the grievance officer will have the around 72 hours to address it. तो आप additional responsibility दीजिए to the grievance officer. प्राइवेसी इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो वी हैव सीन कि लास्ट ईयर व्हाट्सएप ने एक लॉ सूट फाइल किया था अगेंस्ट द रूल्स विच बेसिकली रिक्वायर्ड द इनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू ट्रेस द आइडेंटिटी ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज and it said that it poses the privacy risk to the users. तो आजकल के टाइम पे जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह यूज़ हो रहे हैं, तो इसके ऊपर कंटेंट रेगुलेशन को लेकर ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पे आ रही है. इससे पहले हमने डाटा लोकलाइजेशन की बात की थी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था. एंड दिस इज़ अबाउट द कंटेंट मॉडरेशन डिसीजन. That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.